Hello and good evening, students. Please, everyone, put your attendance in the chat box so that we will continue. Has everyone put your attendance? सब लोगों ने अपनी अपनी अटेंडेंस लिख ली है? यहाँ पे नहीं लिखी है। तन्वी, लक्ष्य, अथर्वा, भैरवी, लावण्या, अर्शद, कृष्णा, सो इन सब लोगों ने अटेंडेंस लिखी है। ओके, सब लोगों की ऑलमोस्ट हो चुकी है। Now I have presented my screen. I hope it is visible to you as well. In the previous class, we have seen what is ethanol and ethanoic acid. Okay, ethanol means what? Ethanol is nothing but alcohol. Okay, and we have seen some properties of it, how ethanol is bad for health and other things as well. So in this class we are going to have a look at chemical properties of ethanoic acid. So ethanoic acid की जो chemical properties है वो हम इस लेक्चर में, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. So ethanoic acid contain carboxylic acid as its functional group. The chemical reaction of ethanoic acid are mainly due to this functional group. तो कार्बोजाइलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है इथेनोइक एसिड में, और जो कुछ भी इसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ द functional group only. Now the first one is a reaction with base, how the ethanoic acid reacts with base. So first of all, it is acid and we are performing its reaction with a base. So what can be the expected result? Obviously it should be salt and water, isn't it? जब हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो नॉर्मली हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. सो सिमिलर with this case also. So a reaction with strong base. See, now the base is strong and we have ethanoic acid. So ethanoic acid gives neutralization reaction with a strong base, sodium hydroxide, to form a salt and water. So see, this is a base, sodium hydroxide, and this is a ethanoic acid, and these are the results, that is salt and water. These two are the byproducts we are going to get with this chemical reaction. The IUPAC name of salt formed is sodium ethanoate. Okay, so see, this is sodium ethanoate, while its common name is sodium acetate. You have learned in the previous standard that acetic acid is a weak acid. Will the salt sodium be neutral? Okay, so will this salt be neutral or not? This is the question, and obviously this salt is going to be neutral. Now reaction with carbonate and bicarbonate. तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से एंड बाइकार्बोनेट से कैसे होती है वो हमें देखना है. Now carbonate and bicarbonate both are salts, isn't it? So see, we have to perform one experiment in order to observe the reaction of ethanoic acid with carbonate. So this is the apparatus that we need: a big test tube, small test tube, bent gas delivery tube, rubber cork, thistle funnel, stand, etc. So chemicals required are acetic acid, sodium carbonate powder, freshly prepared lime water. Now what is acetic acid? Acetic acid is nothing but ethanoic acid. Okay, now arrange the apparatus as shown in figure. Place sodium carbonate powder in a big test tube. Pour 10 ml acetic acid through the thistle funnel. Observe the changes taking place in the two test tubes.
See now, this is our experiment setup. In it, one big test tube is given here, and सोडियम कार्बोनेट का जो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, दिस इज सोडियम कार्बोनेट इन इट्स ब्लू, इन इट्स लिक्विड फॉर्म। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वॉशिंग पाउडर रहता है उसका जो, जब हम उसको वाटर में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वही सॉल्यूशन यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में है। ऐसे पकड़ के हमें चलना है। नाउ थ्रू दिस फनल वी हैव टू pour द एसिटिक एसिड, जो कि हमारा इथेनोइक एसिड है, वो हमें इसमें डालना है। नाउ व्हाट रिएक्शन वी आर गोना ऑब्जर्व, दैट वी हैव टू सी। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी देखो। In this activity, ethanoic acid reacts with the basic salt, namely sodium carbonate, to form a salt named sodium ethanoate, ethanoate, water and carbon dioxide gas। तो इसमें क्या क्या बनेगा, जब उसकी रिएक्शन एक सॉल्ट से ही हो रही है तो अगेन अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट बनेगा, दैट इज सोडियम इथेनोएट एंड water and carbon dioxide। So these three things we are gonna get। now इसमें देखिए क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑलरेडी था, तो सोडियम इथेनोएट इसमें बन रहा है, वाटर तो पहले से है ही, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ओके, तो वो जो गैस है दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस टेस्ट ट्यूब, सॉरी दिस ट्यूब टू द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि हमने क्या लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया है। सो लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे हो जाएगी, एंड वी विल गेट अ मिल्की काइंड ऑफ पेस्ट, और वी कैन से सेमी liquid thing in this test tube। Okay, so see, the CO2 gas of effervescence passes through the gas delivery tube and reacts with the lime water in the small test tube। lime water turning milky is the taste of carbon dioxide gas if sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in the above activity। similar observations are obtained। सो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे बाइकार्बोनेट भी लेते हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट्स वी आर गोना गेट। सी यहाँ पे सोडियम इथेनोएट हमें दिख रहा है, एंड वाटर इज देयर एंड CO2 इज देयर। सो सिमिलर chemical reaction is there for sodium carbonate as well as for sodium bicarbonate। now this use your brain power section is not in your syllabus, so that's why we are not going to waste our time on that। now esterification reaction, now what is esterification reaction? Substances having ester as the functional group are formed by reaction between a carboxylic acid and an alcohol। तो esterification में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे जी। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है कि ईस्टर हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। सो बिफोर दैट वी हैव वन एक्सपेरिमेंट हियर, एक्सपेरिमेंट सेटअप हियर। सो अपरेटस देखिए, टेस्ट ट्यूब है, बीकर है एंड बर्नर है। सो दिस इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड चाहिए, इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। So these two are the requirements। Take 1 ml of ethanol and 1 ml glacial ethanoic acid in the test tube। तो इसमें हमें क्या लेना है, इथेनॉल as well as ethanoic acid लेना है, and add few drops of concentrated sulfuric acid in it। Keep this test tube in the beaker containing hot water or hot water bath for 5 minutes। Then take 20-30 ml water in another beaker and power the above reaction mixture in it and smell it। so देखिए यहाँ पे सिर्फ वाटर है, जो बीकर है बीकर में वाटर है, और जो हमने टेस्ट ट्यूब रखा है ना, तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इथेनॉल है एज वेल एज इथेनोइक एसिड है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इट द हीट। सो इसका रिएक्शन क्या होता है देखो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल in presence of an acid catalyst and ester ethyl ethanoate is formed। so यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, that is acting as a catalyst। so ethanoic acid plus ethanol that makes or that gives us the products ethyl ethanoate and water। so this is the formula for ethyl ethanoate and water। so this is the reaction that we are going to see। so esters have sweet odor, majority of fruits
owe their odor to a particular ester present in them. Esters are used for making fragrances and flavoring agents. When an ester is reacted with the alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and carboxylic acid in the form of sodium salt are obtained back. This reaction is called saponification reaction, as it is used for preparation of soap from fats. So ester plus sodium hydroxide, that will result in sodium carboxylate plus alcohol. So this is again one reaction that you should remember. Now our next topic is macromolecules and polymers. So what are these macromolecules? We have seen in the beginning of the chapter that the number of known carbon compounds is as large as about 10 million, and the range of their molecular masses is as large as 10 to the power. Okay, is this portion excluded from the syllabus? Which one? Macro molecules and polymers. Okay. Okay, I just didn't observe the syllabus lately. Okay. मैंने अभी फिर से तो I think, okay, so that means our chapter is over, I think, isn't it? Yes, so this chapter is over, we can say. Sorry, I didn't notice that this portion is removed from the syllabus. Okay, so that's why we were continuing, but let it be. So I think we should take the revision. Okay, so I shall go to the revision part. Is it okay? We will be taking revision. So I think first chapter की हमने revision ले ली है, gravitation की revision हमने ले ली है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की भी रिवीजन हमारी हो चुकी है, केमिकल रिएक्शंस की हम रिवीजन लेंगे थोड़ी देर में, एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम थोड़ी सी रिवीजन आज करते हैं. ठीक है, सो वी विल रिवाइज फोर्थ चैप्टर. सो फोर्थ चैप्टर पेज नंबर 47. So thanks Om for suggesting me that the portion is removed from syllabus. Okay, तो मैंने अभी फिलहाल लेटली आपका सिलेबस चेक नहीं किया था, तो मुझे ये पता नहीं थी बात. थैंक यू. चलो, सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स because of the potential difference in 2 points, isn't it? So this is electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने ये चैप्टर लिया था कि वो किस तरह से फ्लो होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन एटम टू अदर एंड हाउ दे मेक द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट. सो ये कुछ हमने सेटअप भी देखा है. ओके, नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट. दिस इज नोन एज द, okay, fourth lesson goes hard to me. Okay, we will revise it Om, and then we will see. So जब हम किसी रेजिस्टर को इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट we connect the resistor in any circuit, then what happens? The heat is produced. This is known as heating effect of the current. I don't know आप लोगों ने रेजिस्टर देखा है या फिर नहीं देखा है, लेकिन आपने घर में वाटर बॉयलर हुआ या फिर इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें सबने देखी है, और इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. किस प्रॉपर्टी का? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी जो एलईडीज आते हैं या फिर सीएफएल लाइट जो होते हैं, वो लाइट कुछ अलग टेक्निक यूज करते हैं, बट जो पुराने लाइट्स हुआ करते थे, जिनका की लाइट जो है वो येलो टाइप का आता था, ट्रांसपेरेंट लाइट रहते थे. बराबर, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे मुझे नहीं पता. सो वो जो ट्रांसपेरेंट लाइट थे उसके अंदर एक टंगस्टन की वायर रहती थी, एंड
that wire used to give us the light, मतलब जब हम उसमें से करंट पास करते थे तो क्या होता था, वो लाइट हीट अप होती थी, गर्म होती थी, एंड वो इतनी गर्म होती थी कि उससे लाइट हमें मिलती थी. ओके, सो दिस टाइप ऑफ कॉइल यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द बल्ब एज वेल एज इन द इलेक्ट्रिक कुकर. जो पुराना, मतलब पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक कुकर थे इस टाइप के. ओके, अभी इस टाइप के इलेक्ट्रिक कुकर मोस्टली यूज करना अलाउ नहीं है बिकॉज दे कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so they are not feasible. So that's why nowadays we don't use such type of electric cooker or heater, but this property is used in such type of electric cookers and heaters. So this is the bulb I was talking about. इसमें देखिए क्या है, एक ग्लास का मतलब आउटर शील्ड रहता है, एंड एक कॉइल है, सोलेनॉइड टाइप कॉइल है. वो जो कॉइल है वो टंगस्टन की रहती है, एंड दैट इज सपोर्ट, जो सारा सपोर्ट दिया गया है, एंड दिस इज स्क्रू कैप, जिससे कि हम उस लाइट को होल्डर में फिट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द bulb I was talking about. Now, okay, so let's go further. What is the next point? So let's take this examples लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाएंगी. A 6-meter long wire made from an alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. तो देखो 6-meter long wire. Oh, so okay, so examples are so excluded from the syllabus. Okay, sorry, तो मुझे syllabus I think चेक करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, वी शॉल कॉल ऑफ टुडेज क्लास. हम आज का क्लास कैंसिल कर देते हैं बिकॉज आई नीड टू चेक द सिलेबस वंस. एंड हमारा सिलेबस वैसे तो टीचिंग खत्म हो चुका है, इजंट इट? टीचिंग तो हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ हमें रिवीजन करना है. सो मैं एक बार सिर्फ सिलेबस चेक करता हूँ फिर से, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ अवर रिवीजन. ओके, सो आई थिंक वी शुड कैंसिल टुडेज क्लास. ठीक है, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो, so thank you, bye bye, we'll see you in the next class. Chalo students, bye bye, thank you.